Let's just go through the third sum. So let us read the question by question. In the third sum, calculate the current through 60 watt lamp rated for 250. बेटा when they say rated for 250 मतलब क्या कि ये जो बल्ब है वो कितना पावर कंज्यूम करेगा 60 वॉट जब आप 250 वोल्ट सप्लाई पे कनेक्ट करोगे. समझा बेटा क्या मैं बोला? रेटिंग वोल्टेज का मतलब क्या होता है? व्हेन यू कनेक्ट अ लैम्प टू 250 वोल्ट्स द पावर कंज्यूम इज 60 वॉट. बराबर बेटा? तो ये दो डेटा पॉइंट से कल भी मैंने आपको सिखाया था, आज भी सिखा रहा हूँ. दो चीज मिलता है. एक होता है सेफ लिमिट करंट आई. क्या मिलता है आपको? सेफ लिमिट करंट आई मिलता है. जैसे P = VI होता है तो आपको I मिला. और दूसरा आपको मिलेगा रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प. ओके. सेफ लिमिट करंट का मतलब क्या था? कोई बता सकता है? कल हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया था मैंने. व्हाट डू यू मीन बाय सेफ लिमिट करंट बेटा? Any one of you? Come on guys, open The up. current can't exceed that limit. Yes beta, that is very true. The maximum current which can pass through the device is that is called safe limit current. So 0.24 amperes है. Or what does R indicate in this case? Resistance of the device या resistance of the lamp in this case. बराबर? अभी सेकेंड केस में क्या बोला है उन्होंने? बोला कि अभी मेरा लाइन वोल्टेज है ना, लाइन वोल्टेज 200 है. कितना है? 200 है. मतलब माय पावर सप्लाई इज 200 वोल्ट्स. मुझे मालूम है कि मेरा लैम्प 250 वोल्ट्स पे 60 वॉट पावर कंज्यूम करेगा. तो अगर मेरा लाइन वोल्टेज 200 हो गया है, कितना हो गया बेटा? 200 हो गया है. तो हाउ मच पावर इट विल कंज्यूम? we got new V which is 200. We got resistance of the device 250 to 25.6 and I found the power. Hope so it is clear now. Chalo, please go through it. Guys, are you comfortable? Every one of you? Three sums में comfortable है आप लोग? Shall I move ahead? हाँ आराम से बेटा. As I said बेटा एक सेशन एक्स्ट्रा ले लेंगे, बट आराम से करना है सब कुछ. अच्छे से करना है. चलो नेक्स्ट सम.
बेटा फोर्थ सम, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, रेटिंग वोल्टेज दे दिया है बेटा। अभी तुम लोग मेरे को है ना एवरी टाइम सम के पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज बाय रेटिंग वोल्टेज। कम ऑन टेल मी, अगर मैं ये डेटा पॉइंट लिखता हूँ रेटिंग वोल्टेज इज 100 watt 250 volts, कम ऑन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट Safety डू you mean by, method. no, what do you mean by rating voltage? So the amount of energy current you can send through it, it's safe to No. send that much amount of No, current. no, not at all. What do you mean by rating voltage? अगर मैं बोलूँ what do you mean by the statement the rating voltage of electric bulb is 100 watt 250 volts? What do you mean by the statement? So 100 watts of power with 250 voltage. Yes beta, an electric bulb will consume 100 watt of power when connected to 250 volt supply. Simple. समझा बेटा? When they say what do you mean by the statement? रेटिंग वोल्टेज से दो चीज मिलती है जो आप लोग बोले, सेफ लिमिट करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस। बट व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट, ये होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को जितना फेंट मेमोरी है मेरा, पेज नंबर 205 पे 8.20 में थर्ड लाइन, फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 100 watt 220 volt। समझा बेटा? जब लिखा ना स्टेटमेंट एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एज 100 watt 220 volts, लिखा ना फिर, it means that if bulb is lighted on 220 volt supply the electric power consumed by it is 100 watt। तो आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से लाइन टू लाइन रीड करो बेटा, डोंट जस्ट डू फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। हाँ बेटा, लाइन टू लाइन रीड करो। हाँ बेटा So बोलो। electric bulb is rated 100 watt 250 voltage means electric bulb will consume 100 watts of power to produce 250 No, watt. it will consume 100 watt of power when connected to 250 volt supply। Okay sir, thank you. हाँ बोलो बेटा। In the fourth sum, if we find out R first and then we solve like V is equal to IR, then Why we want to go with so much detail? इतना टाइम पास क्यों करना तेरे को? हाँ बहुत टाइम है एग्जाम में। नहीं, क्योंकि मैंने वैसे ही सॉल्व किया था and I'm not getting the answer. मिलेगा आंसर, चांस ही नहीं मिले, कैलकुलेशन एरर। B equals to V square by R, so R is V square by P। So बोल मेरा बच्चा। So do you use this formula P is equal to V square upon R only when it is like changing the voltage? Generally and in power in parallel, मालूम है कल एक सम था when in the circuit was in parallel, Yeah. that time, because in parallel circuit we know voltage remains same। Yeah. Yeah, that's why। And to find resistance, Okay. in fact I'll say most of the time we use this formula। we use I square R only when it connected in series। करंट दिया है और एक सर्किट है जो ये जो करंट पूरे सर्किट से पास हो रहा है इन सीरीज, तब we go with I square R। Don't by heart it, understand the data point क्या बोलना चाहता है बेटा, ठीक है? Yeah. मैं सबके लिए बोलता हूँ बेटा, फिजिक्स से तुम लोग एक जनरलाइज रूल करने जाओगे तो कभी नहीं होगा। जैसे केमिस्ट्री में कितना सारा एक्सेप्शंस होता है, वैसे फिजिक्स में वो एक्सेप्शंस नहीं होता, बट you have to analyze the data point and then depending on that you have to go with it। चलो, a bulb of power 40 watt is used for 12.5 hour each day for 30 days। Calculate the electrical energy consumed। Energy consumed is power into time। बेटा पावर 40 वॉट्स है, वॉट्स को किलो वॉट्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000, 12.5 into 30।
An electric press is rated calculate electrical energy consumed by the press in 16 hours. Energy is power into time. बड़ा 750 watt है, किलोवाट में डिवाइड बाय 1000. An electric appliance having a resistance of 200 ohms, voltage is 200 volts, time is 5 minutes. In joules and in kilowatt hours. ठीक है बेटा? Energy is, बेटा इधर V और R दिया, तो V square by R into time only it makes sense. So 200 into 200 divided by 200 into time कितना है? 5 into 60. 300 into 200. ये joules में है. बेटा come on tell me, मेरा बच्चा tell me to convert joules to kilowatt hours क्या करना चाहिए? 1 kilowatt hours is equivalent to how much joules? 3.6 into 10 raised to 6. Very good. तो 6 into 10 raised to 4 होगा तो कितना होगा? होप सो यू आर कंफर्टेबल. देख लो एक बार. बेटा मैंने कल जो रिकॉर्डिंग भेजी उसको डाउनलोड करके रख दो. हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका कि whenever you want to access in future, अब तो बोर्ड एकदम दूर है ना बेटा, तो कोई भी पार्ट के न्यूमेरिकल्स, कैलोरीमेट्री के, करंट के न्यूमेरिकल्स आपको कभी भी रिवाइज करने हो तो आप कर सकते हो. Just request, don't send to everyone. So in sounds like the seventh one, why do they give us the voltage if we don't have to use it in the sum? देना है. रीडिंग वोल्टेज में कभी भी हम लोग ये देते ना, पावर और वोल्टेज ही देंगे ना. Whenever reading voltage comes into the picture, बराबर? So for the fourth sum, can you even solve by writing P is equal to V square upon R, and then can you solve? क्यों इतना टाइम पास करना है? देखो करंट चाहिए था, पावर है, वोल्टेज है. कम ऑन यार, रेजिस्टेंस फाइंड करेगा, फिर रेजिस्टेंस से करंट ढूंढेगा. क्यों इतना टाइम पास करना है? व्हाई? जो 1 मिनट के अंदर हो रहा है तो वो सम के लिए तू 5 मिनट बिगाड़ेगा. दो ही लोग ऐसे कर सकते हैं कि तेरे को पूरे पेपर में 1-2 सम ही आता है तो वही करना है, टाइम पास करना है. हाँ, पेपर खत्म नहीं करना तेरे को. So एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ पेपर खत्म कर देना है. तो फिर वेरी गुड बेटा. फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म करना है, टेक्स्ट बुक चार्ट लो, मतलब एक एक लाइन टेक्स्ट बुक का रीड कर दो. n नंबर ऑफ नोट्स मार्केट में अवेलेबल है, n नंबर ऑफ नोट्स. ठीक है, मतलब मेरा नोट्स भी है. फिर मतलब वन ऑफ द गुड नोट्स आई कैन वॉच फॉर इट. ठीक है, बट देन ऑल्सो आई से स्टिक टू टेक्स्ट बुक ओनली. नोट्स ये सब रिफर कब करते हैं बेटा? मैं तुम लोग को बताता हूँ कि एग्जाम, अभी फिजिक्स एग्जाम है और फिजिक्स के एग्जाम के बीच में एक ही दिन बाकी है. ठीक है, और आपको पूरा ब्रश अप करना है, तो ठीक है नोट्स एक बार रेफर कर लो तो यू नो इट बिकम्स इजी. इन दैट केस आल्सो मैं अगर आपकी जगह पे होता ना तो मैं टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट मार्क करके रखता और एग्जाम के टाइम वही देखता. बट देन आल्सो इट इज बेटर के नोट से रिवाइज कर लो एक दिन पहले. बट व्हाइल स्टडिंग, व्हाइल प्रिपेयरिंग,
यू हैव टू, इट्स नॉट अ रट्टोफिकेशन सब्जेक्ट बेटा। मालूम है मैथ्स में मैं तुम लोग को बोर्ड्स के पेपर लिखने को बोले हैं, ओके? क्यों? क्योंकि मैथ्स में ना क्या हो जाता है कि 50% ऑफ द पेपर मोर और लेस, अगर 10 साल का पेपर किया ना आप लोग ने, तो 50% ऑफ द पेपर या 60% ऑफ द पेपर मोर और लेस इन द सेम डायरेक्शन आएगा। इन द सेम डायरेक्शन, सेम नंबर्स नहीं बट सेम डायरेक्शन आएगा, वही सेम प्रॉपर्टीज को रिपीट करते रहते हैं। बट फिजिक्स ऐसा पेपर है ना, इवन नॉट 10% इज रिपीटेड, 10% ऑफ द क्वेश्चंस आर नॉट रिपीटेड। तुम लोग 10 साल के पेपर देखो, 11th ईयर विल बी डिफरेंट ओनली। सो दैट्स व्हाई वी केप्ट ऑन सेइंग कि तुम लोग फिजिक्स को लाइटली मत लो बेटा, खुद का नोट्स बनाओ, खुद का सिनॉप्सिस बनाओ, खुद का ये करो बेटा, बहुत मजा आएगा। एंड देन व्हेन यू स्कोर गुड मार्क्स इन फिजिक्स, you know that joy is different only. But everyone will score good marks in the theory subject, history, geography, literature, Hindi, Marathi, Gujarati, सब लोग स्कोर करेंगे। You know, a difference between a topper and a person which is very average in studies, okay, is just 1 or 2 marks in case of the theory subject which are listed down. इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा मैंने देखा है कि वो लोग आगे होते हैं और ये लोग टॉपर्स लोग पीछे होते हैं ये सब सब्जेक्ट में, बिकॉज दे रटोफाई वेरी वेल। आई डोंट नो डिस्टिंग्विश एनीवन, बट ऐसा होता है। बट साइंस इज अ सब्जेक्ट, फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट वेयर यू विल डोमिनेट कि हाँ मैं हूँ कुछ। I can you will leave your competitors behind in your PCMB। बीबी है ना, अभी तुम लोग रोते हो बट बोर्ड का पेपर बहुत इजी होता है, वन, एंड सेकेंडली मोर और लेस हो जाता है क्योंकि वो रट्टोफिकेशन है। केमिस्ट्री सबसे इजी ऑफ ऑल द साइंसेज, द केमिस्ट्री इज वन ऑफ द इजीएस्ट ऑफ ऑल लॉट, बिकॉज इसमें कुछ करना ही नहीं है ज्यादा, पोर्शन भी छोटू है, और जो डिफिकल्ट चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट उसमें कितना सारा कैंसिलेशन है, ऑर्गेनिक में कितना सारा कैंसिलेशन है, ठीक है? मैं तो एवरेज स्कोर की बात करता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट केमिस्ट्री में भी एवरेज स्कोर आराम से 95 निकल जाता है बहुत सारे लोग का। बट फिजिक्स में यू स्कोर 90 ऑल्सो, इट इज अ बिग टास्क। तो इसलिए मैं तुम लोग को बोलता हूँ कि फिजिक्स पे ज्यादा एफर्ट डालो सो दैट यू विल सेपरेट आउट विद कॉम्पिटिटर्स। अगर आपको 95 प्लस क्रॉस करना है, ओके, तो यू हैव टू स्कोर 95 एंड अबव इन मैथ्स, मतलब 100 इन मैथ्स। If you want to score 97 and above percentage, you have to score 90 and above in physics. Simple rule है ये। You take a call, आपको कैसे पढ़ना है। मैं तुम लोग का फिजिक्स का स्कोर सब लोग का देख के थोड़ा हिल गया था, so I thought I'll take the sessions। अभी भी ये वीक है, आज हम लोग ने ये चैप्टर किया कैलोरीमेट्री का थियोरी। आई विल बी एक्सप्लेनिंग ब्रीफली ऊपर से, एटलीस्ट एक बार रीड तो कर लो, बहुत इजी थ्योरी है, सबसे इजी थ्योरी है ना कैलोरीमेट्री का है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि सेक्शन बी में कैलोरीमेट्री अप्लाई करो, बट उसके न्यूमेरिकल्स थोड़े टफ होते हैं। इसलिए इफ यू कमांड ओवर योर न्यूमेरिकल्स, इफ यू गॉट कमांड ओवर न्यूमेरिकल्स, तो आपको ये पूरे सेक्शन बी में 10 मार्क कैलोरीमेट्री के मिल जाएंगे, क्योंकि उसका थ्योरी सबसे इजी है टू लर्न। 9th one, a bulb rated 12 volts 24 watt, power is 24 watt, voltage is 12 volt, operates on 12 volt battery, ठीक है, for 20 minutes। current flowing through it, P equals to VI, 2 amperes, and energy consumed, power into time। a current of 0.2 amperes।
बट आप लोगों ने देखा होगा, मैं जब भी एनर्जी होता है तो मेरे दिमाग में पावर इंटू टाइम ही आता है. देन आई डिसाइड विच फॉर्मेट टू बी यूटिलाइज, वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर. इन दिस केस आप कोई भी फॉर्मूला यूटिलाइज कर दे चल जाता, ठीक है. पर मेरे पास वी और आई था तो मैंने वी आई टी यूज कर दिया, ठीक है. एक्सप्लेन दिस पार्ट. हाँ बेटा, पूरा क्वेश्चन खाली तुम लोग रीड कर लो. बेटा देखो, माय चाइल्ड, ये सम देखो बेटा, 11th वन. बेटा पहले एक लैम्प था, उसका रेटिंग वोल्टेज दिया था 60 वॉट एंड 240 वोल्ट. तो मैंने रेजिस्टेंस ढूंढा कि बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, 960. ठीक है, ये 960 ओम है बेटा, कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है बेटा, नॉर्मल बल्ब की तरह कनेक्ट किया विद 240 वोल्ट सप्लाई. और एक ही लैम्प था 960 ओम का, लैम्प वन ही था बेटा. कितना करंट फ्लो हो रहा था बेटा, 0.25 एम्पियर्स. मतलब ये बल्ब में कितना करंट फ्लो हो रहा था, 0.25 एम्पियर्स फ्लो हो रहा था. ठीक है, जब मैंने दो बल्ब कनेक्ट किया सीरीज में, तो सीरीज में कनेक्ट किया मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, 1920 हो गया. ओके, फिर वोल्टेज कितना था, 240 रहा. करंट कितना फ्लो होने लगा अभी, 0.125. पहले करंट कितना फ्लो हो रहा था बल्ब से, 0.25 एम्पियर्स. अभी बल्ब से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.125 एम्पियर्स. ठीक है, लेस करंट फ्लो हो रहा है मतलब लेस ब्राइटनेस. लेस करंट फ्लो हो रहा है मतलब लेस ब्राइटनेस. लेस करंट फ्लो हो रहा है मतलब लेस ब्राइटनेस. लेस करंट फ्लो हो रहा है मतलब लेस ब्राइटनेस. बेटा अंडरस्टूड बेटा, गाइस अंडरस्टूड. Yes, sir. ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब आई स्क्वायर आर टी होता है ना, तो आई कम हो गया मतलब हीटिंग इफेक्ट भी कम होगा, मतलब एनर्जी भी कम होगा. So, वेरी, हाँ बेटा बोलो. so you said that we use this formula when the circuit is in parallel, but we used it this time in series. Why? विच फॉर्मूला यूज बेटा? P is equal to V square. बेटा लिसन केयरफुली प्लीज, अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट जनरलाइज. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लैम्प का जो पावर और वोल्टेज दिया था वो क्या है, व्हाट डज इट इंडिकेट, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज 60 वॉट्स एंड 240 वोल्ट्स इज गिवन एज. क्वेश्चन रीड कर, फर्स्ट लाइन रीड कर बेटा. रेटिंग वोल्टेज है बेटा, पावर Yes. रेटिंग दिया है, दिस इज अ पावर रेटिंग. Yeah. ऑलवेज रिमेंबर, पावर रेटिंग से दो चीज मिलता है, एक सेफ लिमिट करंट मिलता है एंड एक रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प मिलता है. सो आई यूज P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प.
Okay. I use I use P equals to V square by R to find the resistance of the lamp. ठीक है. Now it was a coincidence कि उसका पावर रेटिंग 240 वोल्ट्स है और मेरा सप्लाई वोल्टेज भी 240 वोल्ट्स है. ठीक है बेटा, मेरा पावर वोल्टेज भी मतलब मेरा पावर रेटिंग भी 240 है और सप्लाई वोल्टेज भी 240 है बेटा. ठीक है. इससे मैंने जब करंट ढूंढा तो V by R, V equals to IR, so I is V by R. मेरा सप्लाई वोल्टेज कितना है 240 एंड R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब which is 960. बराबर. So I is 1/4 which is 0.25 amperes. Got it बेटा? You know what? You all don't understand the concept. इधर से मैं जब P equals to VI करता हूँ ना, when I use P equals to VI and I get I, वो क्या होगा I? You get same answer. You get same answer. But what is the difference in that I and this I, which I calculated right now? P equals to VI, so I is P by V. बराबर. So 60 by 40, 1/6, 1/4. Tell me, what is the difference in that current and this current? Mathematical value same. Tell me, when I use P equals to VI in this case, I get I. What does it in? Come on, tell me. Sir, that Guys, come on, speak up. That is the कोई भी. Sir, the first. Yes. The The first current जब मैं P equals to VI करता हूँ तो वो मेरे को सेफ लिमिट करंट बताता है कि भाई इसका सेफ लिमिट करंट है ना P equals to VI, so I is P by V. I is P by V. ओके. तो मेरे को ये जो करंट है ना, ये क्या बताता था, अरे भाई ये तो सेफ लिमिट करंट है, इससे एक्सीड मत होना. बस ये डेटा पॉइंट मेरे को एक बताता है. इन रियलिटी मतलब जब मैं एक्चुअली सर्किट में लगाता था, ऐसा मैंने सर्किट बनाया, जब 240 वोल्ट सप्लाई पास किया, ओके, मेरा रेटिंग वोल्टेज भी 240 था, मेरा सप्लाई वोल्टेज भी 240 था, तो सेम हो गया, टेंशन नहीं था. तो मेरा सप्लाई वोल्टेज 240 था, मेरा रेजिस्टेंस 960 था, करंट कितना पास हो रहा है सर्किट से 0.25. तो मेरा एक्चुअल करंट भी कितना पास हो रहा है 0.25. मेरा सेफ लिमिट करंट भी कितना है 0.25. सो इन दिस केस एवरीथिंग वाज सेम. व्हाई? बिकॉज मेरा सप्लाई वोल्टेज एंड मेरा पावर रेटिंग का जो वोल्टेज था वो दोनों सेम था. ओके, गॉट इट माय चाइल्ड? तो वी यूज, मैंने तुम लोगों को कब बोला कि P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R. अगर ये मेरा सर्किट इंस्टेड ऑफ सीरीज में पैरेलल में होता तो मैं ऑब्वियसली पावर ढूंढने के लिए V स्क्वायर बाय R जाता. Any confusion? Please open up and tell me, sir, why not this, why this? पूछो बिंदास. Because तुम लोग है ना दो डिफरेंट एस्पेक्ट को मर्ज करने की ट्राई कर रहे हो. पावर रेटिंग मतलब मेरे को खाली दो डेटा पॉइंट बताता है कि हाँ ये जो डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस इतना है और सेफ लिमिट करंट इतना है. नाउ कम्स द केस व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई. समझा बेटा? तो उन्होंने देखो व्हाट इज द रेजिस्टेंस अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, पावर रेटिंग दिया है एंड उन्होंने उसके बाद भी स्पेसिफिकली मेंशन किया है इट इज कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट सप्लाई. दिस वाज पावर रेटिंग का वोल्टेज और फिर मैं एक्चुअली सप्लाई वोल्टेज मेरा 240 वोल्ट है. ठीक है, दैट इज हाउ इट इंडिकेट्स. बेटा 1 to 11 सम्स एक बार गो थ्रू करो. आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा नॉट कंफर्टेबल विद सम कॉन्सेप्ट, वी कैन डिस्कस अगेन, व्हाई नॉट? Sir, बोलो. sir, can you please explain the second case once again? केस 2 बेटा, अभी पहले एक ही बल्ब लगाया था, अभी 240 वोल्ट सप्लाई है मेरा, मैं ऐसे दो लैंप लगाता हूँ सीरीज में, तो इसका द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप इज 960 और 960 क्या हो गया बेटा, सीरीज में हो गया. तो मतलब रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया सर्किट का 1920. तो अभी कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट से 0.125 एम्पियर्स. ओके, पहले कितना करंट फ्लो हो रहा था सर्किट से 0.25 एम्पियर्स, अभी कितना करंट फ्लो हो रहा है 0.125 एम्पियर्स. मतलब कम करंट पास हो रहा है. एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब मोर ब्राइटनेस के लिए मोर हीट एनर्जी दैट शुड बी जनरेटेड. ओके, करेक्ट. देन इन दैट केस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT फॉर्मूला है ना अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का. तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर. अभी करंट इसमें कम है बेटा, तो लेस हीट एनर्जी जनरेटेड, लेस brightness.
Okay, sir. Thank you. So, बोलो how did you get 24 into 20 into 60? So how did 60 go? 1 minute 1 minute 1 minute 1 minute 1 minute 60 seconds. समझा बेटा? नहीं सर. नहीं, अरे 1 मिनट था बेटा, टाइम 1 मिनट दिया था ना उन्होंने. रीड कर क्वेश्चन. 9th one sir, 9th one. 9th वन. हाँ, इधर भी 20 मिनट्स था ना, 20 into 60 seconds को कन्वर्ट किया ना बेटा. मिनट से सेकंड मल्टीप्लाई बाय 60 ना, बराबर कि नहीं? हाँ सर. So could you explain the eighth one? क्या था 8 वन बेटा, बोला रीड कर. So an electrical appliance having a resistance of 200 ohms is operated at 200 volts. Calculate the energy consumed by the appliance in 5 minutes in joules and then in kilowatt hour. हाँ, वो तो कन्वर्जन किया ना हम लोगों ने बेटा. जूल्स में तो सिंपल है, पावर इनटू टाइम. हाँ, जो भी पावर था ना बेटा, उसको वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना मत बोलना, ठीक है? डिवाइड बाय 1000 कर, नहीं सॉरी, जूल्स में के लिए पावर इज इक्वल टू, सॉरी माय बैड, इन जूल्स के लिए एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, पावर को वॉट में रहने का और टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देने का, ठीक है? सो यू विल गेट इजीली आंसर इन जूल्स. कितना आया था अपने को? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 into 10⁴ आया था, 60,000 जूल्स आया था बेटा. तेरे पास देख, तेरे पास V और R था बेटा. पावर एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम होता है. सो एनर्जी इज पावर इनटू टाइम. पावर का क्या फॉर्मूला होगा? अगर आपके पास V और R डेटा पॉइंट में दिया है तो V²/R ले सकता हूँ. Yes, sir. So using that formula, power into time, power is V²/R. I found energy in joules. ठीक है, 60,000 joules. फिर मैंने कन्वर्जन किया, किलोवाट आवर्स में चाहिए था, तो 1 किलोवाट आवर्स इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी जूल्स? 3.6 into 10⁶. सो 6 into 10⁴ जूल्स या 60,000 जूल्स कितना होगा? यूनिटरी मेथड. चलो बेटा, 2 बल्ब्स का रेटिंग वोल्टेज दिया है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस. तुम लोग मेरे को अभी बोलोगे, मैं आपको हिंट देता हूं, आप लोग चालू करोगे बेटा. पावर कितना है? 60 वॉट, केस 1 बल्ब 1, एंड 60 वॉट एंड वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट्स, बल्ब 2. तो R1 ढूंढो बेटा. P is V²/R. सो R1 कितना होगा बेटा? V²/P. R2 कितना होगा बेटा? V²/P. ठीक है, रेशियो ढूंढना है R1/R2 का. टू मच फ्रैक्शन इज इन्वॉल्व, तो मैं क्या करता, अपना ओल्ड टेक्निक, डिवीजन का साइन.
Beta, they have asked energy consumed in 1 hour. Energy consumed in 1 hour. Beta, what is energy consumed in 1 hour? बेटा बोलो एनर्जी कैसे फाइंड करूं? पावर इनटू टाइम. When the power ka unit for energy in 1 hour is kilowatt hour. सॉरी मेरा बच्चा बोलो. So kilowatt We can hours write ka unit. But you want the answer in kilowatt, you can write in kilowatt. You want in joules, you can write in joules. See, SI unit is joules. ठीक है? तो अगर आप joules में भी आंसर लिख के आओगे तो wrong नहीं मिलेगा आपको. And commercial unit of electric energy is kilowatt hours. So in both exam they will specifically mention करेंगे. In this sum they have not mentioned anything. So whatever way you want. चलो मैं kilowatt hours में लिखता हूँ. तो power को मैंने kilowatt में किया और time is 1 hour. ठीक है? मतलब कितना होगा? 0.25 kilowatt hours. अगर सेम आंसर मेरे को सेफ खेलना है तो मैं ना लिटरली जूल्स में भी कन्वर्ट कर लूंगा. 1 किलोवाट आवर आई नो 3.6 into 10⁶ जूल्स होता है ना बेटा. सर अगर नहीं पूछा है तो फिर जूल्स में और शुड बी राइट इट इन जूल्स और किलोवाट जूल्स बिकॉज एसआई यूनिट्स इन द एंड इज जूल्स ना बेटा, इसलिए. ओके सर, थैंक यू. सेकेंड पार्ट ऑफ द सम क्या था बेटा? टाइम कंज्यूम इफ द एनर्जी इज इन 1 किलोवाट आवर्स. तो एनर्जी कितना है बेटा? 1 किलोवाट आवर्स है. बेटा एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम होता है. सो 1 इज इक्वल्स टू पावर शुड बी इन किलोवाट एंड टाइम. ठीक है, चलो 12th और 13 कंपेयर करो बेटा. So can you explain the 13th one? Why not beta? See beta, in the case power is given and time is given 1 hour. तो case number 1 they are asked energy कितना होगा? Energy is power into time beta. So I converted watt to kilowatt by dividing by 1000 and time is 1 hour. So I got answer is 0.25 kilowatt hours. But you know SI unit is joules. तो सोचा कि वो joules में भी convert कर ले to play on a safer side. तो मैंने क्या किया बेटा? किलोवाट आवर्स टू joules में कैसे convert किया? You tell me. बेटा how did I convert? 100. No, kilowatt hours to joules, my child. Kilowatt hours to joules. 3.6 into 10⁶ से मल्टीप्लाई किया. बराबर बेटा? श्योर? Yes, sir. इन द सेकेंड केस उन्होंने बोल दिया था कि एनर्जी इज 1 किलोवाट आवर्स बराबर पावर इनटू टाइम. Okay, sir.
So in the 13 sums of from where did you get 250 upon 1000? बेटा watt to kilowatt. चलो, I'm moving बेटा. Yeah. What happened बेटा बोलो. Three heaters, each rated 250 watt and 100 volt, are connected in parallel to 100 volt supply. Okay. So पहले हीटर के बारे में जानते हैं. हीटर का रेटिंग वोल्टेज क्या है बेटा? पावर इज 250 वॉट 250 watt. एंड वोल्टेज इज 100 वोल्ट्स. तो अपने को रेजिस्टेंस मिल जाएगा बेटा, R इज V स्क्वायर बाई P. बराबर बेटा. सो 100 इंटू 100 अपॉन 250, 40 ओम्स रेजिस्टर मिलेगा. अभी ऐसे 3 रेजिस्टर्स मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है. बराबर बेटा. ऐसे 3 हीटर्स मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है. टू द सोर्स वोल्टेज कितना था बेटा? सोर्स वोल्टेज 100 सप्लाई, 100 वोल्ट. हाँ बेटा, 100 वोल्ट्स को, मतलब मेरा EMF कितना है बेटा? बराबर बेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाई, मतलब ये सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो देखते हैं. तो पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं बेटा. टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं. सो 1/RP कितना होगा बेटा? 1/40, 1/40, 1/40. ठीक है. तो 1/RP कितना होगा? 3/40. सो RP कितना होगा बेटा? 40/3 ohms. सो टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज, बोलो बेटा, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. बराबर बेटा. ये अपना EMF है बेटा. मैंने गलती किया था V लिख के, कि मैं राइट था, चलेगा? सर इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं तो फिर
सेम ही आएगा। बिकॉज मैं परफेक्ट बोला तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इससे ईएमएफ एंड वोल्टेज सेम ही आएगा बेटा। ठीक है बेटा, परफेक्ट बोला तो। सो 100 डिवाइडेड बाय 40/3, सो इट इज 100 इंटू 3/40, 7.5 एम्पियर्स। ओके, अंडरस्टूड बेटा। फिर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर तो हम लोगों ने ढूंढ लिया ऑलरेडी। एंड एनर्जी सप्लाइड इन किलोवाट आवर्स टू 3 हीटर्स इन 5 आवर्स। ओके बेटा, listen, energy supplied in kilowatt hours to 3 heaters in 5 hours बेटा। बेटा you tell me now everyone, एनर्जी सप्लाई के लिए पावर इंटू टाइम होता है, सो पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, इधर बोलो। कम ऑन गाइस, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे पावर का इन दिस केस? बोलो बोलो बोलो। v²/r इंटू टाइम। पैरेलल सर्किट है, मैंने आपको पहले ही बोला था। 100 इंटू 100, टोटल रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 40/3 इंटू टाइम कितना है बेटा? इंटू टाइम कितना है बेटा? 5 आवर्स। इंटू 1/1000 क्यों कर रहे हो बेटा? एनी गेस? इधर है ना, एरो बना के लिख दो। टू कन्वर्ट वॉट टू किलोवाट। ठीक है, तुम लोग के रेफरेंस के लिए। तो कितने जीरोस कैंसिल हो गए? 1 2 3। So why would we use 250 watt as power? एक मिनट बेटा, हाँ, टेल मी नाउ, टेल मी। Why would we use 250 watt as power? व्हाई वोंट वी यूज, व्हाई वोंट ना तुमने पूछा? Yes, sir. ओके, बिकॉज बेटा दैट इज अ पावर रेटिंग। ओके, वो खाली एक हीटर के बारे में था। ओके, वन हीटर इज कंज्यूमिंग 250 वॉट ऑफ पावर। ठीक है बेटा, one one heater is using this one, and the other 3 heaters are there, that too connected in parallel circuit. Okay, so we don't know kitna power har ek heater consume karega beta. So that's why here when we take the entire circuit is taken into consideration, this was talking about only one heater, they are talking about कि ये heater का power rating इतना है। But you all know कि when the different devices या in this case 3 heaters are connected in parallel और series होता, तो करंट कंजम्पशन भी चेंज हो जाता, हर एक डिवाइस में करंट भी अलग अलग फ्लो होता। ये पैरेलल था, इसे वोल्टेज सेम रहने वाला था, उससे कोई टेंशन नहीं था। ठीक है, बट थ्री डिवाइसेस आते हैं ना रनिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, इससे दैट्स व्हाई वी वेंट अहेड विद दिस वन। डोंट जम्बल अप, इसलिए ना फर्स्ट केस खाली एक हीटर के बारे में था। नेक्स्ट पार्ट जो एंटायर सम था वो 3 रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में बात था, ये सर्किट के बारे में बात था। ओके, so that's why the dynamics of the sum changes. Very important, make it very important, sir. तो बेटा 15th वन ट्राई करें हम लोग। Internal resistance also is coming into picture, हाँ बेटा, don't forget.
बेटा आपका लिख के हो गया? Yes, sir. चलो a bulb is connected to a potential difference, a battery of potential difference of 4 volts. Internal resistance दिया है, internal resistance of 2.5 ohms and a steady current of 0.5 amperes is passing through it. ठीक है? Find the total energy supplied by the battery in 10 minutes. Okay? Find the resistance. पहले बेटा मैंने कल के सम से, since yesterday I'm telling you, तेरे पास EMF है और इस total current passing through the total resistance of the circuit मिल जाएगा बेटा. This is 8 ohm total resistance. ठीक है? बराबर? Total resistance is made up of resistance of the bulb R plus small r. So 8 is made up of R plus 2.5. So R is 5.5 ohms. So resistance of the lamp कितना है? This one. Beta, there said total energy supplied by the battery in 10 minutes. Energy is I square RT. Guess कर सकते हो क्यों मैंने ये फॉर्मूला यूज किया होगा बेटा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना है बेटा? 8 इनटू टाइम कितना है बेटा? टाइम कितना था? फॉर 10 मिनट्स. Energy dissipated in the bulb, particularly bulb पूछा है. Again I square RT only. इधर टोटल रेजिस्टेंस लूंगा, अगर बल्ब का रेजिस्टेंस लूंगा. See, my thinking is very crystal clear. सीरीज सर्किट है I square RT. पहले टोटल एनर्जी बोला था, टोटल एनर्जी डिसिपेटेड बोला था, और नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक टू बल्ब, तो बल्ब का रेजिस्टेंस लूंगा. बेटा अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट माय चाइल्ड? बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो फटाफट फटाफट करो. In fact, I'll wait for 2 minutes. I want you to attempt 16 sum on your own. एक बार अटेम्प्ट करोगे? हाँ, फिर हम लोग नेक्स्ट सम पे जाएंगे.
बेटा आई एम वेटिंग, हाँ बेटा. बेटा वेट अ मिनट, हाँ, एंड जस्ट एडिंग समथिंग. बेटा आपको आंसर मिला बाय द वे? गाइस यू गॉट द आंसर्स कि नहीं मिला अब तक? So I got the first part. Got the first one? Okay, not bad.
So got this one. Okay, nice. चलो and solve. Two resistors A and B are connected in parallel. Okay, तो पहले डायग्राम बनाओ अच्छे से, सम तो बाद में देखा 4 ohms and 6 ohms. The combination is connected across 6-volt battery. Okay, EMF मेरा 6 volts है, ठीक है, of negligible resistance, ठीक है, मतलब internal resistance negligible है. The power supplied by the battery, okay, and the power dissipated in each resistor, ठीक है. बेटा we all know in parallel voltage remains same. On top of it internal resistance भी नहीं है. So power 1 क्या होगा बेटा, ये suppose R1 है, ये R2 है मेरा. So power 1 क्या होगा बेटा, V square by R1. तो V कितना है, 6 into 6 upon 6, 6 watt. पावर 2 कितना होगा बेटा, V square by R2 बेटा, 6 into 6 upon 4 कितना होता है बेटा, 9 watt, ठीक है. और टोटल रेजिस्टेंस कितना है बेटा, R1 into R2 upon R1 plus R2 कितना होता है, 6 into 4 upon 10, 2.4. सो पावर कंसंट्रेट कितना होगा टोटल, V square by RP, 6 into 6 upon 2.4, 15 watt. आपने एक चीज नोटिस किया बेटा, अगर एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा गया होता तो टोटल पावर इज इक्वल्स टू पावर 1 प्लस पावर 2 व्हेन केस ऑफ पैरेलल, इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट्स. देखा आपने बेटा और फॉलो किया. इनफैक्ट आपको आई डोंट रिकॉल थियरी में दिया था चीजें को. ठीक है, नोट डाउन करके रखो इतना. बेटा एनी डाउट इन द 10th वन, आई एम मूविंग टू 11, सॉरी ये था 16th था ना, 17th वन. A battery of EMF is connected to 2 and 6, two raised in internal resistance 2 ohms connected to two resistors 4 and 6 in series. Okay, 4 ohms है, 6 ohms है, बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा बेटा, ठीक है. EMF is 15 volts, small r is 2 ohms, R1 is 4 ohms and R2 is 6 ohms. ओके बेटा, सो टोटल रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 4 plus 6 plus 2 कितना होता है, 12 ohms होता है. EMF कितना है, 15 वोल्ट है, तो करंट कितना फ्लो होगा बेटा, EMF अपॉन RT, टोटल रेजिस्टेंस 15 अपॉन 12, 3 5 3 4
1.25 एम्पियर्स कितना होगा बेटा? 1.25 एम्पियर्स फ्लो होगा. फाइन. फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड पर मिनट इन 6 ohm resistor. Energy in 6 ohm resistor is I square into R into T. बराबर बेटा? 4/4 into 5/4. रेजिस्टर 6 ohm बोला तो 6 लिया. टाइम कितना बोला था बेटा? पर मिनट बोला है into 60. So what have you written after parallel? In parallel circuits. बेटा अंडरस्टूड व्हाई आई यूज I square RT and here V square by R. वो समझ लो बेटा, सीख लो. चलो नाउ 18, 19, 20 all are very 19, 20 are very simple. चलो बेटा, आर यू कंफर्टेबल टिल नाउ? 17 सम तक ठीक है. 18 वाला करते हैं बेटा. बेटा कल ही मुझे बोल दो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है इधर. सो बोला है वाटर इन अ केटल कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई टेक्स 5 मिनट्स. अगर 220 वोल्ट को सप्लाई को पास किया है बेटा तो इट टेक्स 5 मिनट्स टू बॉइल. अगर सेम वाटर को मुझे बॉइल करना है बट मेरा सप्लाई वोल्टेज अभी हो गया है, कितना हो गया है बेटा? 200 वोल्ट्स हो गया है. सो हाउ मच टाइम विल इट टेक? तो मेरे दिमाग में एक बार तो आ गया कि चेंज इन वोल्टेज वाला है. आई एम गोइंग टू यूज वी स्क्वायर बाय आर टी. ठीक है बेटा, आई एम गोइंग टू यूज वी स्क्वायर बाय आर टी वाला फॉर्मूला. ठीक है, देखो मैं कैसे करता हूँ. इसको भी स्टार मार्क करके रखो. वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस. बेटा वोल्टेज जितना भी हो, एक चीज सेम है कि वाटर को मुझे बॉईल करना है तो सेम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. ओके, सेम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. अगर वोल्टेज कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा. बट टू बॉईल द सेम अमाउंट ऑफ वाटर आई नीड द सेम काइंड ऑफ एनर्जी. तो कैन आई राइट H1 is equals to H2? Can I write V1 square upon power 1 into time 1 is equals to power 2 into time 2? बराबर बेटा. पावर 1 क्या होगा बेटा? V1 square upon R into T1, V2 square upon R into T2. Guys, can anyone tell me why I'm not writing R1 and R2? Can anyone tell me why? Resistance will remain the same. Because I'm using the same electric kettle. It is just that power has fluctuated, मतलब voltage has been fluctuate, so because of which my time will fluctuate. But the device is not changed. मेरा वही electric kettle है, तो resistance same ही होगा बेटा. ठीक है. So V1 कितना है? 220. Time 5 minutes. If I keep in minutes, I'll get answer also in minutes. Comparison ही है.
गाइस अंडरस्टूड हाउ टू डू इट? अगर आपको समझ में आया है तो आई वांट यू टू ट्राई 19 एंड 20 ऑन योर ओन. वेरी इजी, मतलब कुछ है ही नहीं करने लायक 19 एंड 20 इसमें. प्लीज ट्राई इट आउट. So can you explain this 18th one once again? Why not बेटा? सी बेटा मेरे पास इलेक्ट्रिक केटल है. इन रियल लाइफ ऑल्सो यू नो ना बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल पावर फ्लक्चुएट होता रहता है. ठीक है, पावर फ्लक्चुएट होने की वजह से क्या हो जाता है? ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं देखो बोलता हूँ कि मेरा ये एसी है. फाइन, पावर फ्लक्चुएट होता था तो क्या होता था कि समटाइम्स इट इज एबल टू कूल इट वेरी फास्टर, sometimes it is taking more time, little bit more time. Why? Because there is a fluctuation of voltage. अगर voltage ज्यादा है तो power फटाफट ज्यादा हो जाएगा, because of it it will cool faster. Similarly water को boil करने के लिए जो energy चाहिए वो चाहिए. Will you agree with me? मेरे पास 1 लीटर वाटर है, मुझे इसको boil करना है, तो मुझे जितना जितना energy चाहिए उतना चाहिए. तो energy is not going to change. Sorry, H1 equals to H2. My bad. हाँ, H1 equals to H2. The energy is not going to change. पावर फ्लक्चुएट हो रहा है उसकी वजह से टाइम फ्लक्चुएट होगा. मतलब अगर पावर कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर पावर ज्यादा है तो थोड़ा टाइम कम लगेगा. मतलब रेसिप्रोकल रेशियो, कम पावर ज्यादा टाइम, ज्यादा पावर कम टाइम बेटा. ठीक है, तो H1 equals to H2. Why? Energy required to boil the water is going to remain same. Now energy is power into time, power into time. Power 1 is V square by R because in whatever it is, इलेक्ट्रिक केटल तो सेम ही ना. मतलब अगर मेरा एसी है, एसी तो सेम है ना, उसका रेजिस्टेंस जो भी होगा वो तो सेम ही होगा, वो थोड़ी चेंज होने वाला है बेटा. तो रेजिस्टेंस इज गोइंग टू रिमेन सेम. ठीक है बेटा, तो P1 क्या होगा बेटा? V स्क्वायर बाय RT. P2 क्या होगा? V स्क्वायर बाय RT. R बट कैंसिल बेटा. V1 स्क्वायर इज 220 into 220 into 5, 200 into 200 into T2. So T2 will be divide करो बेटा and you get a required answer. Are you comfortable now? Yes. बेटा वीक बोला था इससे इंटू 7 किया. हाँ बेटा, चलो इसके बाद लास्ट सम. कॉरेलेटिविटी सो वास्ट बेटा. हाँ, ऑलमोस्ट अपने हमने देखा होगा कल से कितने न्यूमेरिकल्स किए. 21 प्लस 13 34, 34 प्लस हमने कितना किया? 150 है क्या? कुछ भी बोल रहे हैं. ठीक हो, 34 प्लस 31 कितना होता है? 65.
स्मॉल एग्जांपल में कितना 65 प्लस 16 कितना होता है 81 plus 13 94 and almost 701 sums किए हम लोग ने. Sir, after this we are doing calorimetry, right? Yeah, we are starting with calorimetry. Very easy chapter. Theory wise very easy. Numericals, yes, you have to think, you have to spend time in it. हाँ मेरा बच्चा. हेलो हाँ હું તમને 2 મિનિટમાં કરું હું કોલ કરું. हाँ बेटा 21 a geyser is rated 1500 volt 250 volts. It is connected to this current drawn बेटा. करंट कितना ड्रॉन होगा बेटा? पहले R ढूंढ लेते बेटा. R is V square by P. Okay. So guys, that completes your current electricity finally. 101 sums, not bad. Not more than 10 minutes का break. 10:45 go sharp. We'll start with calorimetry now. Okay. So could you send We'll the stop here and we'll start picture? with calorimetry now. Sure. So could you send the picture of the 21st sum? What I need to send beta? The picture of the 21st sum. मैंने भेजा बेटा. मैंने सब भेजा.